नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोहित जैन है और आज हम बात करेंगे हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग के बारे में। Today's session is all about hydroponics farming and how you can get better at it, and we have an expert Dr. Praveen Singh with us for this occasion. आज हमारे पास हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रवीण सिंह है जो आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग क्या है और व्हाई इज इट सो स्पेशल एंड क्यों लोग उसके बारे में इतना बात कर रहे हैं और कैसे आप घर में अपने छोटे से एरिया में बहुत ही नेचुरल तरीके से प्लांट्स और वेजिटेबल्स उगा सकते हैं अपने कंजम्पशन के लिए या फिर कमर्शियल पर्पसेस के लिए। हाँ दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स फार्मिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है एग्रीकल्चर में, जिसके लिए आपको सॉइल एज अ मीडियम टू ग्रो नहीं चाहिए। यू कैन यूज इवन वाटर इंस्टेड ऑफ सॉइल टू ग्रो योर प्लांट्स। यस, इवन आई वाज शॉक्ड द फर्स्ट टाइम आई गॉट टू नो अबाउट इट। मैं भी काफी वो था, एक्साइटेड था इसके बारे में जानने में। और दोस्तों, खास बात यह है कि उसके बावजूद ट्रेडिशनल फार्मिंग से हाइड्रोपोनिक्स 95% लेस वाटर कंज्यूम करता है। सो इट इज नॉट ओनली organic and a new way of growing your foods and vegetables, but it is also very eco-friendly. ये हमारे नेचर पे काफी ही ज्यादा बेनिफिट करता है, हमारे नेचर को, हमारी ह्यूमन बॉडी को भी और हमारे मदर अर्थ को भी। तो दोस्तों, मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगा। आज डॉक्टर प्रवीण हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रवीण इज एन एक्सपर्ट इन हाइड्रोपोनिक्स, वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री, and he has been in this field for over 15 years, 15 to 20 years, and he also heads the hydroponic division at Dabur. Or like his teaching is his passion, and he wants to share his knowledge about hydroponics with as many people as he can. तो दोस्तों, उससे पहले थोड़ा सा मैं भी अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मोहित जैन है और मैं रॉकेट स्किल्स से हूँ। अब रॉकेट स्किल्स क्या है आप पूछेंगे। रॉकेट स्किल्स एक ऑनलाइन माध्यम है आप लोग को नई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सिखाने का और बिजनेस में और जॉब में आपको हेल्प करने का। हम नई टेक्नोलॉजीज, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज आपके लिए लाते हैं बहुत ही सरल भाषा में विद टॉप एक्सपर्ट्स, ताकि आप सीख सके चीजें और अपने बिजनेस को और अपनी जॉब में ग्रो कर सके। तो धन्यवाद दोस्तों आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए। और अब मैं आज के एक्सपर्ट डॉक्टर प्रवीण को इनवाइट करूंगा and I would request him to give a brief introduction about himself and what we'll be discussing today. Good evening, Dr. Praveen. Hey Mohit, good evening. How are you? I'm good. That's great. So shall I start? Yeah, if you can give a brief introduction, then we shall start in another 2 minutes. Yeah, my introduction always goes a little longer, so I'll restrict myself. So basically, Okay. if I just talk about और मैं अपना परिचय दूं तो मैं डॉक्टर प्रवीण सिंह और yes, the खेती बाड़ी वाला, and I'm proud to say that I'm a खेती बाड़ी वाला, क्योंकि बचपन से जब से मैंने I belong to a farmer family, and जब से शुरू किया है खेती बाड़ी शब्द सुनते ही लोगों को कहीं ना कहीं एक अजीब सी फीलिंग आती थी कि वो गरीब, दबा, मैला कुचला, गंदे कपड़े, फटे कपड़े, वैसा वाला आता था। So, but yes, so I want to change that thought process, and that's how I feel proud to say that I'm a खेती बाड़ी वाला। But खेती बाड़ी की जो हमने अपनी पढ़ाई की डॉक्टरेट इन एग्रोनॉमी, वो सब खेती बाड़ी जो थी मिट्टी के साथ थी। और हमने पढ़ने के बाद अपना कैरियर जो शुरू किया वो डिफरेंट फील्ड से होता हुआ देन अभी आज के डेट में मैं हाइड्रोपोनिक्स में पिछले 8 से 10 सालों से हाइड्रोपोनिक्स में ही हूँ। I started with the development sector with the European Commission as a consultant, and then followed by Tata Chemical में fertilizer business देखा। fertilizer business के बाद हमने कुछ अफ्रीका का एक्सपोजर लिया। अफ्रीका के बाद then again I came back and then I entered in some government type of organizations who worked as a joint director in National Horticulture Research and Development Foundation। उसके बाद फिर से एक बार हमारी फर्टिलाइजर की शुरू हुई और उसी समय I'll just want to share that कि वहीं पे हमें अपॉर्चुनिटी मिली हाइड्रोपोनिक्स के बारे में।
And I really want to say that the moment one of the senior executive of a company, he just dropped me a very small message in my LinkedIn that we are working on a hydroponic project. Will you be interested? So at that time मुझे हाइड्रोपोनिक की जो लिटरल मीनिंग होती है, शाब्दिक मीन अर्थ जो होता है, वो भी नहीं पता था. I started Googling out like everybody used to do. Hydroponic is what? Then I just studied a little bit, and in a day I just said yes, yes, I'll be interested because my interest, what I want to come back from Hyderabad to Delhi, and the job was in Delhi. So why I am just emphasizing that कि ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कि सीखने में बहुत दिक्कत होगी. So anybody can learn that technique. So I'm also something started from a zero, and now I can say that at least I know a little bit about hydroponics. So again, good evening to all of you from खेती बाड़ी वाला, थोड़ा modern खेती बाड़ी करता है. So good evening, welcome to this session. We'll take you around little brief about the whole what we are going to discuss during this course. So let's first introduce, and then I'll take you forward. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. दर्शकों, मेरी बस दो छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आप लोग का बहुत कम समय लूंगा. एक है कि आप लोग अपने आप को प्लीज इंट्रोड्यूस करें कमेंट्स में. जैसे कि मैं देख रहा हूँ बहुत अलग अलग जगह से आए हैं, बट सब किसी ने कमेंट नहीं किया है. हम जानना चाहते हैं कि हमारे आज के दर्शक कहाँ से आए हैं, फ्रॉम विच प्लेस दे आर फ्रॉम इन आवर कंट्री. So please introduce yourself, your name and your place in the comments so that we also get to know you guys. तो आप लोग हमें जानते ही हैं अब, मुझे, मोहित को और डॉक्टर प्रवीण को. अब हम आप लोग को भी जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में प्लीज अपना परिचय दें. और दूसरी रिक्वेस्ट है मेरी कि सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा अगर आप लोग को पसंद आए, कि सब्सक्राइब करेंगे तो आगे जो हम इंटरेस्टिंग वीडियोस निकालते रहते हैं वो भी आप लोग तक आएंगी. दोस्तों, हमने डॉक्टर प्रवीण के साथ एक कोर्स भी लॉन्च किया है. आज के सेशन का तो फायदा उठाएंगे ही आप लोग, और बहुत सारे सवाल पूछिएगा डॉक्टर प्रवीण से. एंड में हम 15-20 मिनट का क्वेश्चन आंसर राउंड भी करेंगे. एंड ध्यान से सुनिएगा पूरी प्रेजेंटेशन. बट अगर आप एक्चुअली में एक हॉबी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं डॉक्टर प्रवीण की गाइडेंस से, तो हमने एक 8 वीक की ट्रेनिंग भी स्टार्ट करी है. लाइक वी हैव ऑलरेडी एनरोल्ड 500+ पीपल इन इट एंड इट्स गोइंग वेरी सक्सेसफुल. It's completely online and it's very affordable. It's just for ₹799. So it's an 6 to 8 week training program जहाँ पे हम आपको ऑनलाइन कई सारी चीजें सिखाएंगे, और डॉक्टर प्रवीण की गाइडेंस में आपको बेसिक से एडवांस, मतलब बेसिक से ले जाएंगे, एंड यू विल बी बेसिकली enabled enough and you will be like knowledgeable enough to ask the right questions and start your own hydroponics, either in a hobby purpose or in a commercial purpose. So उसके बारे में हम बाद में बताते रहेंगे. अब आज की प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं. तो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपना इंट्रोडक्शन कमेंट्स में देना ना भूलिएगा. ओवर टू यू डॉक्टर प्रवीण. Thank you, Mohit. I am also looking to the comments in that box. So it is my somehow a kind of a responsibility because the crowd is mixed. So I'm going to use a English kind of a language. Okay, it's a mix of Hindi and English. Okay, so I'll definitely ensure that whatever the message I want to communicate, that should reach to both the language guys. Okay, so yes. So today we are going to discuss briefly about why hydroponic is required. What is hydroponics? Different types of hydroponics. How it is different than traditional farming? क्योंकि सबसे बड़ा question वही आता है कि how it is different than the traditional farming. And then what are the crops we can grow in it, and what is the prospect of hydroponic in our life, and myths of hydroponics. And then finally, Mohit is going to take you across that the course structure and all. So let's move further. So why की बात जब हम करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है what we are looking for. So as a human being, our expectation, what expectation we have? So the expectation is that we need to have a happy family. You know, Mohit, you have to move. So everybody, we all are just looking to have a happy family, and we do everything to achieve that goal.
or expectation. And if we talk about how we can achieve that, so the first is financial security, then go back, financial security, social security, and health security. These are the three components which bring this family happy family. Okay, so yeah, and today all the three components are important, but we are going to talk on health security, how we can achieve that health security. Yeah, Mohit. So there are components to achieve this health security, like lifestyle, physical exercise. Now, after introduction of this pandemic, the breathing exercise and healthy environment and healthy food. So today, what we are going to talk, rest of the things you people are doing individually, like lifestyle and physical exercise, breathing exercise, हम सब अलग-अलग कर रहे हैं. But the two component, the healthy environment and healthy food, that can be achieved by kheti badi. So today we are going to talk on that part, little high tech kheti badi. So let's understand. Yeah, let's understand our journey of agriculture. So human evolution if we talk about, so सबसे पहले hunting gathering, आदमी मार के जानवर खा के और उस तरीके से काम चलाता था. Then they moved to subsistence farming, जहाँ पे उन्होंने अपने जीने के लिए खाना शुरू किया. फिर उसके बाद आपकी थोड़ी सी advance आई, and then finally what is the stage we are in is the commercial farming. And one hand, this commercial farming is giving you a lot of good things. There are some side effects also. We'll talk on that part. So yeah, Mohit, click. Mohit, I'm waiting for you. The click. Anyway, so why की बात हम कर रहे थे? I don't know whether Mohit is there or not. So we were talking about why hydroponics. So अगर हम देखें तो एक तरफ से हम hunting gathering से commercial farming में आ गए. But the moment there are initially only the grower was there only, and there was a consumer, and both were well connected. Okay, but the moment this pandemic came in, it has just broke that contact. So जो direct connection था consumer और producer का, that broken because of the poor logistic. So in that case, एक तरफ फार्मर अपना ग्रो कर रहा है, बट प्रोड्यूसर के पास वो पहुंच नहीं पा रहा था. So in that situation, what is the option left with you? Is okay, if you can produce something, some quantity at your own, then definitely you can sustain yourself, and you can know that what is something like the quality of the produce. Yeah, go ahead. So as I was saying, this modern agriculture has given a lot of good things, but there are some side effects also, because जैसे जैसे आपका commercial agriculture बढ़ता गया, there is a something like every component or every stakeholders were looking for a more profitability. और उस profitability के चक्कर में क्या क्या उन्होंने, they never bother about the quality of the produce. So I'm talking about why hydroponic is important. So the quality, what you are eating today, what you are buying from the shop, you don't have any tool to assess the quality what you are buying. But अगर वही चीज export करना होता है, there is a standard for that, minimum residue level है. Okay, and not only that, the surrounding environment का जो urban population के आसपास का जो growing area है, land used for agriculture, that is also polluted. So what is the option left? Option left is, can we produce our own part of own vegetable at your own restricted area? So answer is yes, you can. And by what? You can use the hydroponic farming technique. By that you can do that. But the only thing is you need to get a
skill for growing that crop. Yeah, next. Yeah. So we talk about all these kind of a thing, like the quality of produce, soil जो आसपास में है वो खराब हो रही है, तो ऑप्शन सब क्या बचता है कि भाई आपका we can go for some high tech farming where we can do our own, produce our own things, and even we can become a job provider also if we take this as an entrepreneurial venture. And pressure of a land is also going to ease if you can produce maybe 10% of the total requirement of your family through this hydroponics. So yeah, move. Yeah. So why we understood कि क्यों करना चाहिए, क्यों जरूरी है हाइड्रोपोनिक आज के जमाने में. Let's understand that what is this hydroponic. So I am sure that whoever is here, they know that any crop production without soil is known as a hydroponics. So कोई भी खेती बिना मिट्टी की हो रही है तो वो हाइड्रोपोनिक्स हो जाती है. But it is beyond. If we go on a technical terms, it is a technique which enables, means जो ग्रोवर होता है उसको enable करता है to create a better microclimate around the root zone. And the roots are mouth for your plant. And if the roots are healthy, then definitely it's by default your plant is going to happen. So the definition, the technical definition of a hydroponic is, it is a technique which enables the grower to create a better microclimate around the root zone. So यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, hydroponic is only restricted to the roots, not the shoots. Yeah, move. So हमने अभी तक जाना why hydroponic, what is hydroponics, now what are the types of hydroponics. अगर बाहर से देखते तो hydroponic एक तकनीक लगती है, but it is having a different types based on the climatic requirement, based on the crop. There are different types of hydroponics you can choose for your own area and own crop. So if you categorize, there is a soilless hydroponics, there's a nutrient film technique of hydroponics, there's a deep water culture. And even if we try to classify further, there is as per the nutrient circulation and as per the light requirement also. If we go for a soilless is a hydroponics where the grower is using a kind of a growing media which is inert in nature. So ये grow bag में भी हो सकता है, ट्रफ में भी हो सकता है, ट्रंचेस में भी हो सकता है, डच बकेट में भी हो सकता है, but everything depends on कि आपका क्रॉप कौन सा है, आप कौन सी क्रॉप करना चाह रहे हैं. So this is based on a growing condition. But if we talk about the nutrient circulation, so there are two types. One is open system, another is a closed system. Open system का मतलब ये है where the excess irrigation water leached out. But closed system का मतलब है where the excess leached water is recirculating. The same water we are using again and again. And based on a light requirement, some people they do hydroponic in a natural light, some people they do in an artificial light. But if we see in India, there is plenty of a light available, so always is advisable or prefer to go for a natural light. So that's the different types of hydroponics. Let's move further. Yeah, so अगला सवाल आता है, पहले तो आपने हाइड्रोपोनिक क्यों करना है, हाइड्रोपोनिक क्या है, हाइड्रोपोनिक कितने तरह के होते हैं. So now the next question is how this technique, the new technique, is different than the traditional farming. So I tried to categorize those things. If we talk about requirement, growing requirement of any crop or any farm or anything, so we need, all plants need air, water, seed, soil, light, investment, farmer or grower. This all is common, but only difference between hydroponic and this traditional farming is that in hydroponic the soil is missing, and soil is a dynamic living body which provide or which gives a lot of support to your plant. And even if the growers are making any mistake, then the shock is going to be absorbed by soil. So traditional farming का advantage यही होता है कि अगर if you don't have desired skill set, then also you can do a farming. Your
buffering agent, the soil will help you to grow your crop better way, and it is going to absorb a lot of shock. And if we talk about the operation, tillage, seeding, irrigation, plant protection, and weeding, harvesting, and post-harvest storage, these all are the operations required in farming. But if we talk about difference between traditional and hydroponics, so there is no need for a tillage, no need for something weeding, and rest of the operations are almost same, but the technicality, the advancement is a little higher side. So हाइड्रोपोनिक एंड ट्रेडिशनल फार्मिंग में ऑटोमेशन लेवल में भी बहुत फर्क होता है. हाइड्रोपोनिक रिक्वायर्ड अ हायर डिग्री ऑफ ऑटोमेशन. Even in traditional farming, people are not even following the automation, but gradually people have started doing that. Required skill is really high for hydroponic as compared to traditional farming, because I mentioned that the buffering agent, the soil, is missing in hydroponic. क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिवली जो प्रोड्यूस हाइड्रोपोनिक्स का आता है, दैट इज सुपीरियर देन योर ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रोड्यूस. So all these are the differences between traditional and hydroponic farming. Let's go. Point next. Okay, so next question आता है कि सब this technique is very good, everything is good. हम इसमें फसल कौन कौन सी grow कर सकते हैं? What are the crops we can grow in hydroponics? So there are some crops which are already being well established in this growing system. And you most probably, if you have seen some of these videos, most of the time you are going to get all these crops like leafy crops, lettuce, basil, kale, rocket, spinach, and some of these vine crop like cucumber, tomato, capsicum, sunflowers, so even some of the berry like strawberries. So these are the crops which are already being well proven. But if I'm saying well proven, it doesn't mean that कि आप उसी किसी कहीं पे भी कॉपी करके उसको उसी क्रॉप को आप अपने प्रोजेक्ट पे ग्रो कर सकते हो. That is the uniqueness of hydroponic project, that each and every project is a unique. So you as a grower need to set your crop production protocol कि खेती कैसे करनी है, उसका पूरा खाका आपको बनाना पड़ेगा. So there are some trial crops which people are still trying, like essential oil bearing crop, medicinal plants, herb crop, fruit crops. So all these are in under trial, and even there are good number of potential crops also. So having discussed all these things कि भाई ये crop आपकी अच्छे से grow हो रही है, ये trial में है, इस तरीके से potential crops है, but the bottom line is any crop can be grown in hydroponic crop production system. So क्या कह रहा हूं मैं कि हाइड्रोपोनिक तकनीक के अंदर आप कोई भी फसल ग्रो कर सकते हैं, but provided you have developed the crop production protocol for that particular crop. कि मतलब आप किसी भी फसल की खेती कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स में, मगर उसका आपको खेती कैसे करनी है वो आपको डेवलप करना पड़ेगा. वो लिटरेचर आपको मिलेगा भी नहीं. अगर मिलेगा, if you get that, you cannot go for a copy paste method. If you are opting for a copy paste method, you are going to struggle in that. So you have to design your own hydroponic crop production protocol. And here I like to mention you that you can grow all fruit crops and orchid crops also. क्या about next? So if we talk about the prospect is very something like crisp. Only two options are prospects are there. One is either you just start producing for your own. तो छोटा सा यूनिट हमने घर में लगाया, हमने अपनी किचन की सप्लाई शुरू कर दी थोड़ी, where we are 100% sure that whatever I am eating is free from any harmful chemical. Not only this, today the guys who are living in urban society, जो आपके metro cities में रह रहे हैं, वे means those kids, वो बच्चे, they never expose how these crops are grown. So that is going to be a fun and learning for the kids at that house. And the most important and really important thing,
the elderly people who are living in that house will get a really good engagement with that. They can spend quality time with the plants. So that's one prospect, is grow your own crop in your limited area. The second is become an entrepreneur and serve your urban customer by producing a quality produce. So these are the two prospects of this technique. You can just go ahead and follow it. Yeah, next. Myths of hydroponics. So ये बहुत जरूरी होता है. Whenever you are going for new things, you need to understand कि भाई इसके आसपास में myth लोगों ने क्या बना रखा है. That is very important to understand and know at the beginning. Once you clear your myths, it will be easier for you to follow and do your best for that particular technique or particular methods or anything. So if we talk about the myth, the first myth is growing crop in water is only hydroponics. So ऐसा नहीं है, आप सबस्ट्रेट पे भी ग्रो कर सकते हैं. द ओनली थिंग इज कि भाई अगर कोई क्रॉप आप ऐसी ग्रो कर रहे हो जिसमें न्यूट्रिएंट आप 100% अपनी विश या विल के हिसाब से यूज कर रहे हो, सो दैट इज नोन एज अ हाइड्रोपोनिक. सो हाइड्रोपोनिक इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड कि पानी में ही ग्रो करोगे तो भी हाइड्रोपोनिक्स होगा. इट्स बियॉन्ड. हाइड्रोपोनिक क्रॉप प्रोडक्शन कैन ओनली बी डन अंडर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन. दूसरा मिथ ये बना रखा है कि भाई हाइड्रोपोनिक करनी है तो केवल आपको ग्रीन हाउस लगाना ही पड़ेगा. विदाउट ग्रीन हाउस यू कैन नॉट डू दैट. सो दैट इज अ मिथ. हाइड्रोपोनिक एक टेक्निक इज अ टेक्निक which enables or create a better microclimate around the root zone. So hydroponic is only limited to your root. So shoot पे तब जरूरत पड़ती है ग्रीन हाउस की जब आप ऑफ सीजन में प्रोड्यूस करना चाहते हैं. So hydroponics और green house का कोई relation नहीं है. Only thing is when you want to produce your vegetable in off season, then only it is required. Limited impact of a climate on a crop production. एक लोगों ने एक ऐसी भ्रांति बना रखी है. If we adopt this hydroponics, the climate, we can grow any crop anytime. For example, they can grow a strawberry in May, June in Delhi. So ऐसा नहीं है. Hydroponic is a technique which ensure the healthy root. If the root is healthy, definitely there will be a more resistance power or healthy plants to fight with adverse climatic impact. But if you will say that it impact padta hi nahi hai, so it is a myth. Whatever the crop you are going to grow in hydroponics, the environmental impact is going to be the same as it is in outside or a traditional farming. Only thing is because the plants are healthier in this technique, so impact is little less. Okay, multifold increase in a crop productivity. See, सुनने में आता है कि भाई 12%, 20%, 60% पैदावार बढ़ गई, 200 गुना बढ़ गई. So it is not something correct in right sense. Definitely the productivity goes up because of two reasons. One, per plant production goes up and you can accommodate more number of plants. But if anybody is saying is 60%, 200%, 300%, so it is absolutely a myth. Okay, hydroponic is not a natural technique. ऐसा भी लोगों ने मिथ बना रखा है कि भाई ये तो बहुत हाई फाई टेक्निक वाला है, इसमें तो मतलब पौधे को जो जमीन से मिलता है वो मिल ही नहीं सकता. But it is, for your knowledge, it is absolutely a natural technique because we are also providing food. And plant का food क्या होता है? वही 16 से 18 essential plant nutrients होते हैं जिसको कि वो absorb करता है और वो healthy होता है. वही आपको ट्रेडिशनल फार्मिंग में भी मिट्टी में भी मिलता है, वही आपको हाइड्रोपोनिक्स में भी सप्लाई करने की जरूरत होती है. एंड द मोस्ट क्रिटिकल एंड क्रूशियल थिंग कि भाई जड़ों के पास ऐसा कोई सेंस ऑर्गन नहीं है कि भाई ये केमिकल से आ रहा है, ये मिट्टी से आ रहा है. उसको तो ये पता है कि भाई अगर मुझे नाइट्रोजन चाहिए तो नाइट्रेट फॉर्म में मैं एब्सॉर्ब करूंगा और वो अवेलेबल होना चाहिए. So this hydroponic technique is an absolutely natural technique which is following the basic protocol of crop production.
और उसके बाद कहते हैं कि ये इन्वायरमेंट को खराब करता है, हाइड्रोपोनिक डिग्रेड द इन्वायरमेंट. I'll not say anything, but this is a myth. I'll only say that if you can grow more number of a plant per meter square area, then आप खुद बताओ, you are contributing for purifying your environment or you are just damaging your environment. So I'll leave decision on you. So hydroponics make make use of light that are harmful. So that is also a myth people creating कि भाई जो harmful light होती है वो भी absorb करता है और use करता है. So if you see the spectrum of light, only infrared, ultraviolet and photosynthetic active radiation, ये तीन तरह के रेडिएशन होते हैं और पौधे को कोई मतलब नहीं होता इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट से. ओनली इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट क्या करते हैं, दे इंक्रीज द टेम्परेचर अराउंड द प्लांट एंड प्लांट उसकी वजह से अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए सब कुछ करता रहता है, बट इट only absorb the photosynthetic active radiation जिससे कि वो अपना खाना बनाता है. Hydroponic can be a practice indoor only, कि भाई आप खेती करो तो इंडोर में ही हाइड्रोपोनिक्स हो सकता है, ऐसा कहीं नहीं है. आप अगर अपनी जरूरत के लिए, इफ यू आर जस्ट गोइंग फॉर हॉबी हाइड्रोपोनिक्स, ग्रो योर सीजनल क्रॉप without doing anything kind of a protection like a greenhouse या indoor या कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, आपकी क्रॉप अच्छे से पैदा होगी. Even in Delhi, you can grow your strawberry during winter. You can even we grown something saffron in Delhi. So केसर भी हमने ग्रो किया है हाइड्रोपोनिक्स में ही. So hydroponic is something like it depends on the kind of a uses you want, and based on that it is either indoor or outdoor or in open. कैसे करना है, it depends on your uses of the produce. And hydroponic is an expensive or difficult to practice. ये दोनों myth अभी अगर हम बोलें तो इंडिया के लिए myth नहीं है, this is a reality. But if you go in a developed country where this technique is on an advanced level, it is a myth. Because if we talk about, हम expensive होने का जो main criteria होता है कि भाई पर मीटर स्क्वायर एरिया में हमने कितना पैसा लगाया और कितना पैसा पा रहे हैं. So अगर आप टमाटर का एक एग्जांपल लेते हैं तो यूरोप में 180 किलो का आसपास 1 मीटर स्क्वायर एरिया से प्रोड्यूस करता है. तो देन यू कैन इमेजिन दैट व्हाट इज द काइंड ऑफ प्रोडक्शन दे आर गेटिंग. तो उनके लिए अगर 2 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है तो इट इज नॉट गोइंग टू बी द कॉस्टली अफेयर फॉर यू, फॉर देम. बट in India it is still a little costlier because आपका 2 reason है. आपका the cost of infrastructure is pretty high and the margin charged by those vendors are a little higher side. And then second is the kind of a production we are getting per meter square area is not fetching the value what the people in Europe and developed country में मिल रहा है. So this is some myths I've just tried to means you people aware about what the myth and what the reality is. Yeah, in India also it is little difficult so far, but एक बार आपने हाइड्रोपोनिक को अच्छे से कर लिया, if you standardize your crop production protocol, then it is such a easy technique where you can grow your crop on autopilot mode. So with the least human intervention. Yeah, go to next. Okay, who is the coach for? Now Mohit is going to jump in and he is going to explain about that. Thank you so much, sir. I hope all of you love the presentation, but do not go anywhere. I request all of you, because soon we'll be starting with a question answer session. So in the comment section, please post your questions. तो दोस्तों सवाल, अपने सारे सवाल कमेंट्स में लिखे, हम जल्द उनका जवाब देंगे. बाकी अब मैं थोड़ा सा आप लोग को कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ. ये हमारा 6 से 8 हफ्तों की ऑनलाइन ट्रेनिंग है. 6 से 8 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें हम एक हॉबी प्रोजेक्ट भी करवाते हैं. अगर इसमें आपको थोड़ी और सहायता चाहिए तो हम 8 वीक्स तक भी एक्सटेंड करते हैं. And it is an amazing course. But before that, what is this training and who is it this training for? So if you are a businessman, अगर आप हाइड्रोपोनिक्स में कमर्शियल पर्पस के लिए करना चाहते हैं तो ये कोर्स बहुत अच्छा है आपके लिए, क्योंकि इसमें हम बेसिक से आपको समझाएंगे कि साइंस क्या है और कैसे ये बड़ा कर सकते हैं, इसको छोटे स्केल से आप बड़ा कैसे कर सकते हैं. अगर आप स्टूडेंट हैं, अभी आपने रिसेंटली एग्रीकल्चर में बीएससी, एमएससी या पीएचडी करी है, तो दिस इज एन अमेजिंग वे टू एक्चुअली
अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव लर्नड इन योर स्टडीज और उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका। अगर आप होम मेकर हैं या हॉबीस्ट हैं और अपने शौक के लिए करना चाहते हैं तो भी ये आपको पूरी एक अच्छे तरीके से डॉक्टर प्रवीण गाइड करेंगे, जिसमें he will tell you how you can like start your own hydroponics project. So basically, if you want to learn this and explore this technology, then this is definitely for you. uh, what will you learn in this? How will you learn in this course? It's just for 799. काफी affordable course रखा है हमने ये। इसमें सीट्स काफी कम है, सिर्फ मेरे ख्याल से 20 सीट बाकी हैं इस बैच के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन लॉग ऑन टू www.myrocket.in/hp and reserve your seat. We have over 30 plus recorded videos for this. We have around 30 plus videos with live sessions every week in this course. And हर हफ्ते डॉक्टर प्रवीण से आपकी बातें होंगी, जिसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो आपको गाइड करेंगे और अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। वी हैव अ मोबाइल ऐप जहाँ पे आप कभी भी आकर वीडियोस देख सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। जूम पे हमारे लाइव सेशंस होते हैं और वो जो वीडियोस हैं उसका आपके पास लाइफ टाइम एक्सेस होगा। और एक्सपर्ट टिप्स एंड एडवाइस मिलेगी और बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जहाँ पे आप आपस में बातें कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं एक दूसरे से, नॉट जस्ट डॉक्टर प्रवीण से बट एक दूसरे से भी। तो दोस्तों ज्यादा देरी ना करें, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी जर्नी स्टार्ट करने में तो जाइए www.myrocket.in/hp and you can start your journey with us on hydroponics and be a part of this course, this online training. We have had over 500 people who have been like part of this, and all of them are loving it. Most of them have started their own project and काफी एडवांस तरीके से वो अब अपनी हाइड्रोपोनिक्स जर्नी कंटिन्यू करना चाहते हैं। डॉक्टर प्रवीण, इफ यू कैन टेल द व्यूअर्स अ लिटिल बिट अबाउट द कोर्स स्ट्रक्चर एंड क्या-क्या हम इसमें कवर करेंगे। I think better we can go ahead with that question answers. Definitely, yeah, it is going to Sure. be a kind of structure where we are going to divide the ritual learning process, and the whole course is divided into 8 different weeks. और उसमें एक तो आपको ये sections पे lectures, already the videos are there. Every week you are going to get an option for interacting about your query satisfaction. Plus, from the second or third week, you will start doing your project. Which project is somehow what is we are expecting. It depends on our expectation is at the end of the course, each participant have his own hobby hydroponics unit based on his learning, understanding, and crop identification during basic structure of our course. And then next. Yeah, so these are something kind of structure we are following, but this is formal lecture is in terms of and quiz is combined now. And assignment also we give you not often because everybody is engaged somewhere, but yes, we give you a one assignment of preparing a project based on the learning of those videos. You are the guy who are going to design your crop based on crop using your hydroponic growing system, and then you have to list down the component required for that structure, and then you have to install all. और जहाँ कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी, we as a team will be there to support. And I'm sure there is a group created for each batch. There, even the people they start learning among themselves. So that's how the ultimate objective of this project to enable you either build your own hobby hydroponic, or you become capable of asking questions if you are venturing in commercial hydroponics from your vendors, ensure or minimize the risk of.
Yeah, I think Mohit, it will be better if we can take up the questions because Yeah, we will sure. need to satisfy their queries. Yeah. Sure, sir. We'll take that up. First question is by Satish Kohli. He wants to know the difference between hydroponics and aquaponics. Okay, Satish. It is one of the same thing, but only thing is in aquaponic वो मछली आ जाती है और मछली में कोशिश ये करते हैं कि भाई मछली का जो एक्सक्रीटा है उसको भी हम एडजस्ट कर पाए. बट according to me, aquaponic is also similar to hydroponics, but only according to me is अपनी लाइफ को थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड बनाने का ऑप्शन है इनिशियली. उसके बाद फिर एक बार आपने अच्छे से सीख लिया aquaponics भी, then you can do whatever you want to do. Yeah. Thank you, sir. Akhil Panath wants to know, do you provide nutrient formula for different crops? Akhil, we don't want to give you something like मछली पकड़ के आपको सर्व नहीं करना है. What we want to do, we want to enable you. ठीक है? We will give you an option. We have, I don't know, maybe you have gone through with any of our video or my video on the YouTube or anywhere. You will see that we have a design or a formula-driven Excel sheet. And in this course, we provide opportunity to each and every individual participants to do hands-on from remote, right, sitting at their home on his computer. With my guidance, he can design his own recipe for whatever the crop he is looking for. So that option we will definitely give you, and we will enable you to be able to design your own fertilizer recipe for hydroponic crops. Yeah. Yeah. Thank you, sir. What Jay Hirpara is asking? Germination in Oasis Cube. Okay. Jaya, I don't know why you are using Oasis Cube. If you are doing a hydro, something like a hobby kind of a thing, till that time it is okay. But जैसे ही आप कमर्शियल में जाते हो तो आपको ये देखना है कि भाई कितना कम से कम खर्चा करके मैं ज्यादा प्रोड्यूस कर पाऊँ. And your Oasis Cube is somehow 1 से 2 रुपए का या ₹2.5 का पड़ता है, which is good for your long duration crop. But आप जब vegetable या something leafy vegetable में जाते हैं, so better to go with somehow coco peat, which is going to cost you 10 or 5 paisa per plant. Okay. Now coming back to your question of how deep you should put your seed in Oasis. So it depends on the size of your seed. जितना टाइनी सीड होगा, जितना छोटा सीड होगा, वो आपको उतना ही ऊपर रखना होगा. बड़ा सीड अगर थोड़ा नीचे भी चला जाएगा तो भी वो जर्मिनेट हो जाएगा, बट छोटे सीड को मैक्सिमम 1 to 2 mm के ही डेप्थ पे रखना है. बट उसके लिए आपको ये रखना है कि आपका मॉइस्चर एंड एयर का प्रॉपर बैलेंस हो, तब आपका जर्मिनेशन अच्छा होता है. या नेक्स्ट. Amol wants to know which cultivation is more productive, natural or artificial light. प्रोडक्टिव का ऑप्शन आपके पास दो होता है अमोल. प्रोडक्टिव में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी आप अगर देखें तो डेफिनेटली आपका दोनों में अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट करेंगे तो देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल लाइट एंड नेचुरल लाइट. बट जब आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, आपका ओपेक्स जो होता है आपकी आर्टिफिशियल लाइट में बढ़ जाता है. खर्चा आपका बढ़ गया तो आपका मुनाफा कम. और आप खेती अगर कर रहे हो तो मुनाफे के लिए कर रहे हो, so it's always advisable if you can grow your crop in natural light. इंडिया में plenty of natural light है. ये जो artificial light का सिस्टम है, these are systems where the scarcity of a light is there. If you go in some of these cold countries,
आपको पता चलता है कि 5-6 महीने तक बर्फ पड़ी रहती है और पता चलता है 2 या 3 घंटे के लिए धूप निकलती है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में आर्टिफिशियल इज गोइंग टू परफॉर्म बेटर। इंडियन कंडीशन में अगर आप देखते हो तो आर्टिफिशियल इज नॉट a viable proposition till the time you have really a premium customer who is ready to pay you something like 100 or 200% of a premium over a normal vegetable. Yeah, next. Thank you, sir. Vishnu wants to know, is our course online? Vishnu, I would like to know, yes, it's completely online. In fact, sir is mostly takes the course from another continent, and but due to technology, we are able to cater to a lot of people, and like scale is, we are able to achieve the scale. So yes, it is completely online, and we ensure you that online does not mean that it is not effective. It is online but 100% effective. Yeah. Sachin There any Mahendru difference? wants, Yeah. yeah, go ahead, sir, Sachin is please. asking, is there any difference between the vegetable produced by hydroponic and organic vegetable produced? Sachin, again, I'll only ask a question against your question. If you are able to realize a better premium price of organic produce, then definitely you should go for organic. But nowadays, people are there and they know the quality. And if we talk about the quality wise, so hydroponic is one of the most healthy produce, means system which produce the most healthy crop. Why? Because अगर आप देखिए इन दोनों में डिफरेंस जो होता है, आप उसमें कोई हार्मफुल एग्रोकेमिकल नहीं यूज कर रहे, and that is something like hydroponic system where you get an option of avoiding using any harmful agrochemicals. So yes, in some of these European countries, even the hydroponic use is considered to be as an organic, but in India, still it is not considered as an organic. But yes, people are there who are started recognizing hydroponic produce as a quality health use, so they are willing to pay a premium even over organic produce. Yeah. Thank you, sir. जगदीश चंद्र दास जी पूछना चाहते हैं, वो एक मैकेनिकल इंजीनियर है और वो पूछ रहे हैं क्या उनके लिए हाइड्रोपोनिक्स एक सही डिसीजन रहेगा, क्या इसमें देयर इज लाइफ फॉर अ मैकेनिकल करियर वाइज और प्रोस्पेक्ट्स, वो पूछना चाह रहे हैं। जगदीश, आप अगर देखो तो एक फेमस केस है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर गोवा के हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले अपना हाइड्रोपोनिक सेटअप गोवा में किया था एंड ही सक्सीडेड रियली टू अ लेवल वेयर वी कैन से दैट ही हैज क्रिएटेड अ आइडेंटिटी फॉर हिमसेल्फ. So this is the technique where anybody can enter and grow the crop. Only thing is कि अपनी सी आप होनी चाहिए भाई, आप इतना समझ सको कि आपका पौधा खुश है या नहीं खुश है. So indirectly, if I talk, you need to be capable enough talking to your plant. Talking to your plant means not literal meaning कि आप उससे बात कर रहे हो, हेलो कैसे हो भाई, तुम वो जवाब दे रहा मैं अच्छा हूँ. मीन्स ऐसा एक वो होना चाहिए कि जैसे ही आप उस ग्रीन हाउस में या ग्रोइंग एरिया में घुसो, आप दिख जाए कि हाँ जी ये वाला पौधा स्ट्रगल कर रहा है, क्यों स्ट्रगल कर रहा है, उसका आपको आंसर ढूंढना पड़ेगा. सो यस, देयर इज एनीबॉडी कैन वेंचर इन हाइड्रोपोनिक्स और वो अपने इसको एक कमर्शियल लेवल तक दिया. या Thank you, sir. This is a very interesting question. Shiraj Nikam wants to know, is market available for selling hydroponics? इसका जवाब मैं केवल एक ही दूंगा कि जब तक मार्केट नहीं हो तब तक आप हाइड्रोपोनिक में एंटर ना करो. फर्स्ट एंश्योर योर मार्केट. ठीक है. But yes, I can say that now in metros, this hydroponic produce is creating their own separate space in fruits and vegetables section. तो अगर आप दिल्ली, बॉम्बे या बैंगलोर में जाके देखेंगे तो आप मीन्स ऑर्गेनाइज रिटेलर्स की जो शॉप्स होती हैं लाइक बिग बाजार एंड फूड हॉल, ऑल दोस थिंग्स, वहां पे एक सेक्शन क्रिएट करना शुरू हो गया है जो कि हाइड्रोपोनिक स्पेसिफिक क्रॉप के लिए. Thank you, sir.
Nilesh Jain wants to know, he wants to do it for a commercial purpose, but he's asking, should he go directly or start with home and then move ahead? भाई इसका आंसर आप ही के पास है. आप मारुति गाड़ी ठोकना चाहोगे या मर्सिडीज ठोकना चाहोगे? भाई, if you something like damage your means little investment, there is nothing like बहुत ज्यादा सा नुकसान नहीं होगा. मारुति गाड़ी तो फिर ठोक ठाक के आप सही कर लोगे, बट अगर मर्सिडीज ठोक दी तो पता चलेगा कि बैंक खाली हो जाएगा. So my advice is always go with a prototype or a pilot project. Understand, learn the basic integrity because this technique is really required a high degree of skill. अगर skill नहीं है तो फिर project आपका struggle करेगा. So I advise go ahead with that, but start with the very small, whatever is something like you can. Thank you, sir. Bono RK wants to know which type of water is used: rainwater, pond water, tap, or bore water. ये सवाल आपने एक if you remember, this question is being asked by that guy who is in Bhutan or Burma, Saurabh. So see, if you want, you can use any water, but the preferred option is if you take out all the salt by doing this RO, रिवर्स और ऑस्मोसिस से अगर आप उसका सॉल्ट पूरा निकाल दोगे तो आपका कंट्रोल 100% आपके ग्रोइंग सिस्टम पे हो जाएगा. बट अगर आप ग्राउंड वाटर यूज करोगे विदाउट द आरओ ट्रीटमेंट के, देन यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर कि क्या उसके अंदर पानी के अंदर न्यूट्रिएंट है, मेरी रेसिपी क्या बन रही है, इन दोनों को माइनस करके हमको जो अचीव करना है वो हम अचीव कैसे कर पाएंगे. It's a little complicated, but you can use any of the water, but preferred for the commercial venture, it is a RO. Yeah. Thank you, sir. Again, sir, our favorite question. Shriran wants to know what's the minimum investment. Shiraj, it depends on your pocket. मिनिमम इन्वेस्टमेंट का कोई लिमिट नहीं है. इट डिपेंड्स ऑन कि भाई आप कौन सी क्रॉप कर रहे हो, आप किस सीजन में करना चाह रहे हो. देयर इज एन नंबर ऑफ अ फैक्टर, सो देयर इज नथिंग लाइक अ बॉल पार्क नंबर कि मैं आपको ये बता सकूं कि भाई 50 लाख लगेगा, 1 लाख लगेगा, 10 लाख लगेगा. इट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सी क्रॉप सेलेक्ट कर रहे हो, कब प्रोड्यूस करना चाह रहे हो, कौन सा मार्केट है, उसके बाद ही कॉस्टिंग का वर्क हो सकता है. Vasu wants to know, for home purpose, how can we grow vegetables in this system? वेरी सिंपल. आप एक छोटा सा सिस्टम बनाओ अपने हिसाब से, जो आपकी क्रॉप की रिक्वायरमेंट है. सब कुछ आपको टमाटर, खीरा ये सब करना है तो सॉइलिस में जाओ, और अगर आपको पालक, धनिया और लेट्यूस वगैरह करना है तो आप एनएफटी में जाओ या डीडब्ल्यूसी में जाओ. सो दिस सिस्टम इज समथिंग लाइक वाइल समथिंग मे बी दो ऑप्शन है. एक, आप जब इस कोर्स में आएंगे तो कोर्स में यू कैन जस्ट डिजाइन योर ओन सिस्टम एंड देन यू कैन स्टार्ट ग्रोइंग योर. सो दो कंपोनेंट होता है, एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर में आपको पूरा कंपोनेंट अपने से बनाना पड़ेगा, एंड सॉफ्टवेयर में आपको ये सेट करना पड़ेगा कि भाई मेरे को कौन सी क्रॉप लगानी चाहिए, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, कब पानी देना है, कितना खाद देना है, कब उसकी हार्वेस्टिंग करनी है. सो ऑल दोज थिंग्स वंस यू एस्टैब्लिश, उसके बाद तो आप उसको ऑटो पायलट मोड कि भाई आपने एक टाइमर लगा दिया, आपने कुछ एक जुगाड़ कर दिया उसको ऑटोमेशन का और उसको ऑन छोड़ दिया, और बस आप डेली देखते रहे, वो अपने आप को ग्रो होता रहेगा, आपको हार्वेस्ट करना पड़ेगा. सो दैट्स द लेवल ऑफ एडवांस थिंग यू कैन डू. या. Thank you, sir. Johnny wants to know, Johnny Rajkumar, is hydroponics organic? Yeah, Johnny, I've already mentioned that in Europe or in some of these developed countries, yes, people are considering this hydroponic as a organic. But as per the definition of organic and Indian scenario, this cannot be considered as an organic, because आपका organic farming कहता है कि भी fertilizer भी डालना बंद कर दो. जबकि अगर आप देखो किसी भी standard में, even the export standard, they also don't consider this
fertilizer mineral as in something like a standard or criteria for judging the quality. So for your question, the straightforward answer, in India, it is not at all organic, but in some of the countries, people are accepted this as an equally or a better product than organic farming. Yeah. Thank you, sir. How many types of nutrients are required, and how we come to know the required nutrition to plant? ये तो थोड़ा सा स्किल का है कोहली साहब, थोड़ी स्किल आप जैसे जैसे गेन करोगे देन यू कैन गेट ऑल दीज थिंग्स। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि केवल और केवल 13 न्यूट्रिएंट होते हैं जिनको कि आपको रेशियोज और ट्विकिंग करनी पड़ती है। सो ओनली 13 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें कि आप आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर सप्लाई करते हो। 13 के साथ 3 और होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि हवा और पानी से मिलते हैं, उसमें आपका ज्यादा कोई रोल नहीं होता है। And all these fertilizers, whatever we are talking about, these fertilizers are available at any good agro input shops, agri input shops, जहाँ पे आपको बीज, दवा एंड खाद मिलती है, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। But only thing is you have to be a very cautious, only opt for a standard or established brand product. Thank you, sir. Yeah. Jay Hirpara wants to know how many days after germination crop needs light? Immediately, जय, immediately. एक बार पौधे की पत्ती बाहर निकल आई, अगर आप लाइट नहीं देंगे तो इट इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक लिंकिंग हो जाएगा। वो पतले पतले ऐसे ऐसे करके, जैसे वो नहीं होते हैं सांप की तरह से भागते से हुए पौधे निकलेंगे उसमें। सो इमीडिएटली आफ्टर जर्मिनेशन, जब जैसे ही वो 2 पत्ती बाहर की तरफ आके खड़ी होती है, बाहर 2 पत्ती होती है, तभी से आपको उसको धूप दिखाना पड़ता है। ठीक है? Sure, sir. Thank you. Pitambar Prushet wants to know the per quintile cost approximately of production for spinach. ये कॉस्ट वाला क्वेश्चन जो है बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो हो सकता है कि मैं उसको आपको 2 रुपए में प्रोड्यूस कर पाऊं, हो सकता है कि वही जो आर्टिफिशियल लाइट में कर रहा है उसको 15 रुपए में भी ना प्रोड्यूस कर पाए, हो सकता है कि जो बाहर खेत में कर रहा है उसको 50 पैसे भी ना लगे। So this is quite subjective questions until and unless we create our boundary। तो इस सिचुएशन में हमको कितने पैसे लगेंगे तब इसको बता पाना मुश्किल। या Sachin wants to know, is it possible to grow saffron, an expensive product, using hydroponics technique with better quality? Sachin, we already successfully done that in Delhi only, Delhi NCR। बट ओनली थिंग इज जो अभी चैलेंज है, बिकॉज हम लोगों ने उसको बीच में छोड़ दिया था, एक कॉर्पोरेट से दूसरे कॉर्पोरेट में जाने के चक्कर में वो होता ही है कि जो एक कोई इनिशिएटिव्स होते हैं वो चेंज होते हैं। बट यस, वी सक्सेसफुली प्रोड्यूस सैफरन फ्लावर राइट एट दिल्ली। द ओनली जो कंसर्न मैंने एड्रेस नहीं किया था वहां पे, कि अगर आप सैफरन को देखो तो सैफरन का जो आपका ग्लैडुलस की तरीके का बल्ब होता है, प्याज की तरीके का वैसे ही बल्ब होता है उसका, और जो भी बल्ब होता है अगर वो आपका समथिंग लाइक 40 ग्राम से ऊपर का होता है तो उसमें फ्लावर निकलता है। एंड सैफरन का एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है, उसमें जब ग्रोथ होती है तो सबसे पहले वो फूल ही निकालता है, 2 पत्ती निकलने के बाद सीधे फूल निकलता है। तो जो चैलेंज मुझे जो अनएड्रेस रह गया था कि एक बार जो ग्रो करते हैं हम फॉर्म से, उसकी जो जड़ होती है, प्याज का जो बल्ब होता है, उस बल्ब से जो हम एक फसल डेवलप करते हैं, उसके बाद उसके जो अगली क्रॉप के लिए जो बल्ब बनते हैं वो सही से नहीं बन पाए थे उस समय तक। डेफिनेटली अगर उसका एफर्ट किया जाएगा तो पॉसिबिलिटी है कि वो बन पाएगा, और एक बार वो हो जाता है देन यस यू कैन ग्रो दैट। Thank you, sir. Let us take the last question. I think we are almost out of time.
The last lucky question. Yeah, that's what I'm searching for. I don't want to repeat the question, any type of question. Yeah. How much lighting is required for indoor garden? बट इसमें हाउ मच लाइटिंग का कुछ हमें समझ नहीं आया. हाउ मच लाइटिंग में अच्छा. कितनी बत्तियां लगानी पड़ेंगी या कितना लाइट का इंटेंसिटी देना पड़ेगा या कितना खर्चा करना पड़ेगा. So these are something like the question which is I cannot even answer for that. Very How vague. much? Yeah. Got it, got it. No problem, sir. I guess we are out of time, friends. Yeah. But do not worry. Like, this is what we have made this course for. If you are interested, to get your hydroponics queries answered real time, तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा, हम हर हफ्ते लाइव सेशंस भी करते हैं और डिटेल में स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में सर ने एक स्पेशली बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड, इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में वीडियोस और कोर्स कंस्ट्रक्ट किया है जो आपको 6 to 8 वीक्स में बेसिक्स आपके सॉल्व कर देगा. इट विल एनेबल यू टू स्टार्ट एंड वी विल आल्सो गाइड यू to build your own project together with us. So I would request, if you are interested in hydroponics and are like want to work with Dr. Praveen, then do join our course just for $7.99. Look at it as an investment. Go to this website www.myrocket.in/hp and book your seat now. We only have 15 seats left. एंड अगर आपको कुछ भी सवाल है, कुछ भी डाउट है, तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करें 9310193695 जो स्क्रीन पे है 9310193695. और अगर दोस्तों आप लोगों को नहीं पसंद आया ये, तो वी ऑल्सो प्रॉमिस अ 30 days मनी बैक गारंटी. डू नॉट वरी, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट अ कोर्स. आई एम more than confident on Dr. Praveen's knowledge and that we will deliver whatever it takes to help you in this hydroponics journey of yours. So do give us a chance. Let us start this journey together and help you along with it. So yeah, Dr. Praveen, if you would like to add anything before we end the session, otherwise I think we are good to go for today. It's good enough. We have given a sufficient information to the participants, and yeah, we would like to see them to go ahead with their enhancing their knowledge. That's all. Okay, thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. For Thank coming you. Bye-bye. here. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you, everyone, for coming over here. Dr. Praveen is a very learned man and he wants to help all of you. वो बहुत ही उनको ज़्यादा नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है और आप सबकी सहायता करना चाहते हैं, तो आइए उनके साथ कोर्स में ज्वाइन करिए. बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है, 799. एंड येस, वी विल कीप डूइंग दीज सेमिनार्स, वी विल कीप enlightening you. Our mission is to reach more and more people. और हम मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत में विश्वास करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम आत्मनिर्भर करना चाहते हैं. तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आपको कोर्स और हमारी ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी. Go to www.myrocket.in/hp and book your seat now and let us just start this journey. So I hope to see all of you in our session. We only have 15 seats left, my friends. So if you want to learn, if you want to grow yourself and plants with hydroponics, so enroll in our course. Visit www.myrocket.in/hp. और कुछ भी डाउट हो तो मेरा नंबर यहाँ स्क्रीन पे है 9310193695. Thank you all. Thank you so much. It was amazing. I think it was a really great session. I got to learn a lot and we'll keep having these sessions. But if you want in-depth knowledge, do join our course. Thank you all. Thank you so much. Good night.